Hello everyone. Welcome to the next lecture on the IIT JAM Mathematics 2025. Today I will explain you the solution of question 11 to 20. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the IIT JAM solution. In this playlist you can see I had uploaded the first 10 question with the help of the shortcut tricks as well as the mathematical statistics solution as too. Apart from them, you can see the various other lectures related to the IIT JAMs, all with the help of the shortcut tricks in this video. Now let's start with this simple, how you can solve all these questions in a very simple manner. I will tell you the each questions you can solve with the help of the shortcut tricks. Fine. Make sure what I had told to you, you can read the statement very carefully. हर क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे बट कंडीशन यही है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है आपको. So let's see with the family of the curve which is given by the curve and lying in the first quadrant. So that is my here is the family of the orthogonal trajectory. What is the meaning of the orthogonal trajectory? That means product of the two slope is my -1. So that's the question of this problem. Fine. Which of the following curve is the member of the O, that is the member of the orthogonal trajectory and passing so that 2, 1. So firstly we will see whether any of the option is not satisfying the 2, 1. पहले ये कर लेते हैं 2, 1 देख लेते हैं किसमें satisfied नहीं हो रहा. So it is 1 which is my 4 by 4 satisfied. This is 4 minus 2 which is 2 satisfied. 2 minus 1 is 1 satisfied. 4 minus 1 is 3. All are satisfied. That's fine. There is no issue. Fine. Then how you can find the slope? So firstly, for this given curve, this is my m1 and this is for my m2. Can you find the value of the m1? So y is my lambda divided by x square. So can you find the value of the dy over dx? It is my minus 2 lambda over x cube. Fine. Now look at the given options. Firstly, I can find the value of the m2 from this case. What is the value of the dy over dx? Which is my x over 2. And clearly say if you multiply them, this equation not satisfied. The first option cancel out. Now look at the second example. For the second option, how you can find the derivative of this? It will be my 2x minus 4y dy over dx, which is 0. So what is the value of the m2? Dy over dx will be x divided by 2y. Now whether the products are satisfied, if you multiply them, it is minus 2 lambda over x cube into x over 2y. I can substitute the value of the y is lambda over x square. Now clearly say minus of 2 lambda cancel, x cube cancel. The answer is -1. Yes, it's satisfied. Look at the third option. Can you find the value of the dy over dx from the third option? It comes to be 1. And clearly say m1 and m2 product is not satisfied. Similarly, for the last case, can you find the value of the dy over dx? It comes to be, so m2 for the last option is 1 over y. If you multiply them, it will be minus 2 lambda over x cube into 1 over y. So y, I can substitute the value of y is lambda over x square. Clearly say which is not equal to -1. So the right option is only B is my right answer of the problem. देखिए कितना आसान है, सिंपल. आपको दो स्लोप निकालनी है. m1 is always given to you. Look at the options जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट करके -1 आ जाए. उम्मीद करता हूं आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस वीडियो को. Okay. Look at the second one. Is related to the differential equation, how you can solve and get the solution. It's a very simple question. You can get the answer in within the 15 second or maximum 20 second if you already watch my this lecture on the differential equation. PYQ of this one, PYQ of the differential equation, you will get the solutions in a very simple manner. First of all, you can see I can write this solution is x dy over dx, which is equal to y ln of y over x. So clearly say this system is my homogeneous, and once this is the homogeneous, I can substitute y is equal to vx. So the left hand side, or I can divide this x on this side.
So the left hand side dy over dx. So clearly say from this case it is x v plus x dv over dx, and this side will be my v ln of v. So that implies x dv over dx. I can take an v on the right hand side. It is ln v minus 1. So that implies dv over v ln v minus 1, which is equal to dx over x. Fine. You can integrate them. So if you take ln v minus 1 is t, then 1 over v dv is my dt. So this integration becomes ln of ln v minus 1. This integration becomes ln of x plus ln of c. So that implies ln of v minus 1 is xc. Fine. Now your target is to find the value of the c. I can substitute here. Phi of 1. So x will be 1. Y is my e square. So I need a v. So what is the v? V is equal to y over x, that is e square. So that will be my 2 minus 1. X is my 1 into c. So that implies c is my 1. So if c is my 1, so your answer will be ln v is x plus 1. Your target is to find the value of the phi of 2. That means v is my e of x plus 1 and y is equal to e of x plus 1 into x. Fine. Now phi of 2, that is x is equal to 2 e raised to power 3. So twice e cube will be the right answer of this problem. चलिए अगला करते हैं. Phi is the solution of the differential equation satisfying phi of naught, which of the following is my true. Again, it's a very simple. You can see I can write y minus 1, y minus 3, which is dx. You can use the partial fraction. Fine. It is y minus 1. It is y minus 3. So what is, when y is equal to 1, it is my minus of half. When y is equal to 3, it is my plus of half. Then you can integrate with respect to here. Then what is the integration of this? It is a minus half ln of y minus 1 plus of half ln of y minus 3, which is x plus c. So that implies half is a common. So I can written as y minus 3 divided by, or you can write like this manner. It is ln of y minus 3 divided by y minus 1, which is 2x plus 2c. Now can you find the value of the c? Phi of 0 is 0. So that means when x is 0, y is equal to 2. So 2 minus 3 is mod is 1. This is 1. 0 plus 2c. That will give you c is my 0. Fine. So my final solution becomes ln of y minus 3 divided by y minus 1, which comes to be 2x. Now we will use the options and see whether which one is the right answer. For this case, this is the value of the y. Fine. And when x approaches infinity, your y will be 0, whether it is a true or not. So that means if y is equal to 0, left hand side will be 3 over 1 and right hand side is infinity, which is not possible. Second case, y is equal to 1, x will be ln root 2. If I substitute value on the left hand side, it will be ln of y is equal to 1. It's a minus of 2, mod is plus 2 and it is 0. So 2 over 0 is infinity. Right hand side will be 2 ln root 2. They are not same. So this option is also cancelled. Third option, y is equal to 3, x will be minus infinity. So if I substitute here, it is ln of 0 and it is my minus infinity. Yes, you can see 0 is e raised to power minus infinity. 0 is equal to 0. Correct option. Moreover, what is the value of the log of 0? Is minus infinity. Fine. Look at the last option. Y is equal to 6. X will be ln of 1 by root 2. So when you substitute y is equal to 6, this value will be 6 minus 3, 6 minus 1, which is not equal to 2
ln of 1 by root 2. So that means this option is also cancelled. C is my right answer of this problem. हमेशा ऑप्शन का यूज करिए. देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट कंप्लीटली. यूज द ऑप्शंस and get the right answer in a quick manner. Don't forget to like, subscribe and comment on the videos. You can share this video with your friends as well. Okay, consider the matrix M, which is of the 3 cross 4. Consider the system of the linear equations. Then which of the following statement is true? That's very simple. You can use the concept of the rank. Find system has a solution or not. We all know when the rank of the A and rank of the argumentative matrix are same, then it has a solution. Find whether the solution is a unique, whether the solution is unique or infinitely many. So let's start with this. It will be 6, 2, minus 6, 8, 5, 3, minus 9, 8, 3, 1, minus 2, 4. And your right hand side will be 8, 16, 32. Fine. Now clearly say if I divide R1 by 2 and subtract from the R3, this number will be 0. 1 minus 1, 0. Fine. This number will be minus 2 plus 3. So this number will be plus 1. This part will be 0. Divided by 2. That's a 4. 32 minus 4. 32 minus 4 is my 28. Fine. I can make this number also as a 0. I can multiply the first row by 5 and by multiply by 6. So this part will be 0. This number is my non-zero. Whatever the number will be there, that number will be my non-zero and so on. And similarly, you can change this number. So this number is my non-zero. Clearly say what is the rank of the matrix A? Rank is my 3. So the rank is 2 options are cancelled. Now what is the rank of the A condition B? So clearly say whatever this number here, it may be 0 or non-zero. Rank of the A by B is also 3. So that means yes, it has a solution. So rank is 3. System does not has a solution, cancel. Yes, system has a solution is the right answer of this problem. So your target is not to get the exact answer. रिमेंबर आप एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हो, आपको एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे कुछ भी आए, सिर्फ ये देखना है कि ये जीरो है कि नॉन जीरो है बस. क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो आप इसको जीरो बना सकते हो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके, तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा आपका. फाइन, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, या इसको जीरो बना लो. लेकिन अगर ये नॉन जीरो है तो आपको ये 3 डायगोनल मिल जाएंगे, तो रैंक आपका 3 हो जाएगा. जब भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में हो, आपको वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे कभी भी. यहाँ पे आपको x1, x2, x3 की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे सिंपल सॉल्यूशन पूछा है. सब ये देखिए कि कितना नॉन जीरो है, कौन जीरो है. Okay, look at this. I missed the question number 13th. If you see 12th, 14th, because 13th question is related to group theory. I'm not consider the group theory in this videos. चलिए फिर से मैट्रिक्स के ऊपर है और x की वैल्यू पूछी है आपसे और इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल पूछा है. सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट निकालना है और आइगन्स वैल्यू निकालनी. पहले इस वाले पार्ट से देखते हैं. इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? m क्यूब 0 1 1 विच इज 125 इज कॉमन, विच इज 0 1 1. इससे क्या मीनिंग हुआ आपका? दैट मीन्स अगर आप इसको ax इज इक्वल टू लैम्डा x से कंपेयर करो तो लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ a. अगर आप इससे कंपेयर करोगे 125 इज द आइगन्स वैल्यू ऑफ m क्यूब. अगर m क्यूब की आइगन वैल्यू 125 है तो 5 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द m. क्लियर? तो इस मैट्रिक्स की 3 आइगन वैल्यूज हैं. वन आइगन वैल्यू इज गिवन एज ए माइनस ऑफ 2, सेकंड आइगन वैल्यू इज गिवन एज ए 3 and the third eigen value we have obtained as the 5. Then your target is to find the x. So what is the trace of the matrix M? Trace is x, and the trace is always sum of the eigens value. So x will be my 6. X is equal to 5 cancel, x is equal to 5 cancel. Is it okay? Now the rest of the part is you have to check whether they are invertible or not. So that means your target is to find the determinant of the matrix. What are the eigen value of the m square?
what are the eigenvalue? If these are the eigenvalues of the m, eigenvalue of the m square are 4, 9, 25. Eigenvalue of the m is this. So therefore, m square plus m. What is the eigenvalue of the m square plus m? 2, 12, 30. So what is the determinant of the m square plus m, which is my non-zero? Once this is my non-zero, therefore answer is B is invertible. Correct option. Not invertible is wrong answer. So the correct option is B. There is no need to multiply them. सिर्फ यही देखना है आपको डिटर्मिनेंट जीरो है कि नॉन जीरो है. सो वंस इज अ नॉन जीरो दैट मीन्स इन्वर्टिबल एंड सो इस क्वेश्चन में इस तरह से करने की जरूरत नहीं है कि आपको x की वैल्यू 6 मिली, देन यू कैन कैलकुलेट द m स्क्वायर, देन यू कैन कैलकुलेट द m और उसके बाद प्लस करो फिर डिटरमिनेंट देखो. ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Let fx is given as some functions, the number of the points at which the function is local minimum. That means f dash should be 0, f double dash should be greater than 0. That is the condition. But यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी. क्या पूछा है? नंबर ऑफ द पॉइंट्स. तो सबसे पहले f dash कैलकुलेट करते हैं. So that is my 20x plus e raised to power x minus 2 cos of 2x plus sin x. Number of the points, what is the condition for that? Number of points means जिसपे ये वैल्यूज आपकी जीरो होगी. Fine, I can call this number is say g. I call as a g. So what is your target? Your target is to find the roots of the g. Fine, this is your target. ये नहीं पूछा कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपसे पूछा सिर्फ वो पॉइंट बताइए जिसपे लोकल मैक्सिमम या मिनिमम होगा. तो किस पॉइंट पे मिनिमम होगा? जिसपे एफ डैश की वैल्यू जीरो आएगी. मतलब अगर मैं इस जी को ये लिख रहा हूं 20x प्लस ई की पावर x माइनस 2 cos ऑफ 2x प्लस साइन x, सिर्फ हमें ये देखना है ये वैल्यू जीरो किन किन पॉइंट्स पे होगी. तो काफी सिंपल है. इफ यू लुक अबाउट दिस ग्राफ, x और ये इस y और g. फाइन, सबसे पहले देख लेते हैं कितने पॉइंट्स पे है. जीरो पे आंसर कितना आ रहा है इसका? 0, 1, 0, नेगेटिव. फाइन, जीरो पे नेगेटिव हो गया. और एक पाई ले लेते हैं बिकॉज साइन पाई जीरो हो जाएगा. यू कैन सी g ऑफ जीरो इज माई पॉजिटिव, g ऑफ जीरो इज नेगेटिव एंड g ऑफ पाई कितना होगा? इट इज माई 20 पाई प्लस e raised to power pi. This will be 0. It is a 1 minus of 2. Clearly say this number is my greater than 0 because ये नंबर आपका 2 से बड़ा हो जाएगा. So यहाँ पे कहीं पाई होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी. फाइन, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार तो ये क्रॉस करेगा ही करेगा इसके अंदर. तो 0 तो आपका कैंसिल हो गया. अब क्या ये ग्राफ इसका ऐसा होगा कि मान लो यहां से क्रॉस करा फिर वापिस आया, फिर क्रॉस करा फिर वापिस आया एंड इस तरह से, तब तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे. वो कैसे चेक करा जाएगा? वेरी सिंपल, इसका हम डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं. इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 20 प्लस ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 4 cos ऑफ 2x प्लस sin x. फाइन, नाउ यू कैन सी दैट दिस वैल्यू, ये हमेशा यू कैन सी ये वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी. फाइन, ये नंबर आपका हमेशा 0 1 के बीच, -1 से 1 में रहेगा बिकॉज ये आपका 20 है. ये नंबर जितना भी -1 से 1 में हो, ये नंबर आपका हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव. अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? g आपका क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन. इसका मतलब ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग ऐसा चलता रहेगा. फाइन, अगर इस तरह से फंक्शन मूव करेगा तो ये कभी भी इस तरह से ब्रेक नहीं करेगा. तो अगर ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये कितने बार इस पॉइंट को कट करेगा? सिर्फ एक ही बार तो कट करेगा. बिकॉज क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं है. तो अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमा के? ओनली 1. बिकॉज जी का मतलब रूट्स ऑफ द एफ डैश. तो एफ डैश इज माई इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज वी हैव सीन हियर. तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दैट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is true about this convergence divergence in series? They are talking about the series. Very simple question.
Have you seen my this lecture, infinite series? Just wait, this one. अगर आपने ये लेक्चर सुना है, you can get the answer in a 5 second. Remember 5 second. How? What is the condition for the convergence or divergence? You can see -1 raised to power n cos 1 over n. कौन सा सीरीज का टेस्ट लगाओगे whenever is a -1 raised to power n? Apply the Leibniz test. फाइन. लिबनिज टेस्ट में क्या होना चाहिए? पहली जो मेजर कंडीशन है, लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ, ये जीरो होनी चाहिए. क्या ये जीरो आएगी? व्हेन एन अप्रोचेस इंफिनिटी इज अ cos जीरो, दैट विल बी cos जीरो इज माय 1 व्हिच इज नॉन जीरो. इसका मतलब ये सीरीज आपकी क्या होगी? डाइवर्जेंट. फाइन. सो पहला ऑप्शन कैंसल, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कैंसल. क्लियर? अब आप चलते हैं सेकंड पार्ट पे. सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है? whenever this series is convergent or divergent. So मैं divergent का बता देता हूं पहले. This series is divergent if limit n approaches infinity of an is my non-zero. सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं. So limit n approaches infinity of yn means k is equal to 1 over n plus k. तो अगर आपको याद हो, ये कैसे सॉल्व करा था हमने? पी वाई क्वेश्चंस ऑफ द लिमिट. पी वाई क्वेश्चंस ऑफ द लिमिट में अगर आप देखो और सीरीज वाले में ही देखो तो आपको समझ में आएगा क्विकली से. क्या रूल बताया था मैंने इसका? आप हमेशा एन कॉमन ले लीजिए. सो दिस विल बी लिमिट एन अप्रोचेस, मैं दोनों तरफ एन से डिवाइड कर देता हूं. फाइन. के इज 1 to n, इट्स 1 over n, 1 plus k over n. फाइन. तो मैं x को ले लेता हूं k over n. तो ये क्या बन जाएगा? dx कितना बन जाएगा? 1 over n इंटू डी के. तो ये k से लिमिट चल रही है. सो दिस विल बी माई dx ओवर 1 plus x. लिमिट्स कितनी आएगी? whenever k is equal to 1, it's a 1 over n. as n approaches infinity, it's a 0. whenever k is equal to n over n is my 1. तो ये कितना आंसर हो गया? ln of x plus 1 from 0 to 1, that will be my ln of 2, which is my non-zero. And once the limit is my non-zero, series is divergent. So this option is cancelled. Only D option, which is left behind, is the right answer. Always remember your target is to discard the options. मैं फिर बच्चों कह रहा हूँ, आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए एक बार. मेरा दावा है कि आप इन लेक्चर्स से हेल्प से काफी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे. एक बार नहीं सुना अभी तक, दोबारा सुनिए और बताइए कमेंट में कितने लोगों ने वीडियोस लेक्चर सुने हैं और कितना बेनिफिट मिला आप सबको, सो दैट बाकी लोग भी समझ पाए कि वाकई बेनिफिट है कि नहीं है. चलिए, लुक एट दिस वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज माय कन्वर्जेंट, सॉरी, इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग, बाउंडेड एंड सो ऑन. फाइन. पहले तो इंक्रीजिंग चेक कर लेते हैं. x2 निकाल लेते हैं. x2 का मतलब n की वैल्यू 1 फिल होगी. फाइन. इससे x1 स्क्वायर, x1 इज माई 25 over 4 plus 6. So that will be 1 over 5. This will be my 6.25. Fine. It is my 12.25. और अगर 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 या 10, 5 4 20, and it is less than of x1 because x1 is my 2.5. So what does it mean? x2 is my less than of x1. So what is the meaning of that? Sequence is my decreasing sequence. The first one is cancel, not a decreasing. Third option cancel. Fine. Now, whether it's a bounded or not, how you can check about the boundedness? Again, a very simple. You can either use the numerical analysis concept or the use of the limit point. I will tell you the two methods. First method is I can find the limit point. So if it is a L, 1 over L square plus 6, I assume limit of the xn as n approaches infinity is L. So I can take the n approaches infinity on the both side. So it will be L square minus 5L plus 6 is 0. L will be my 2 and 3. So clearly say the sequence xn is my convergent sequence. Fine. It is a monotonic as well, and moreover 2.5 is lies in between them. Limit n approaches infinity, 2 and 3, sorry.
Fine. What does it mean? That means this is my bounded sequence. Fine. So it's a decreasing, not a bounded. Cancel. This option is the right option. Second method. You can think about the numerical analysis. That is xn plus 1 is g of xn, and when this will be convergent, this will be convergent when the first derivative of the xn is less than equal to 1. So can you find the derivative of this? 2xn over 5 is less than 1. Xn is less than of 5 by 2, and we have seen x2 is less than x1. It's a decreasing, so that will be less than of 2.5, because x1 is my 5 by 2, and clearly say this is my bounded sequence. Fine. So that is the D is my right answer of this problem. उम्मीद करता हूं आपको आसान लग रहा होगा और शेयर करेंगे दिस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ. एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल. चलिए, x1 is my 2, xn plus 1 is for all which of the following statement is my 2, xn plus 1 greater than less than of something. चलिए, if you look about the all these four options, what is the meaning of that? That means your target is to find xn into xn plus 1, whether they are greater than equal to 4, whether they are less than 4, and so on. Clear? Okay, सबसे पहले ये लिमिट्स चेक कर लेते हैं. Again, if I choose the limit as n approaches infinity of xn is L, check whether they are convergent or not. So it will be L 2 plus 1 over 2L. So I can take the LCM, 2L square minus 4L minus 1 is 0. Fine. That will be L is minus B plus minus B square minus 4AB over 2 into 2, 4. So it's my 24. 24 will be 8. 24, that is 6 into 4. So that will be 2 root 6 divided by 4. That is my 2 plus minus root 6 divided by 2. Now because x1 is my positive, fine, so the value of the L will be 2 plus root 6 by 2. That means limit exists. What does it mean? That means sequence xn is my convergent. Fine. Now if the sequence is convergent, they are convergent on the R, and if the sequence is convergent on R, it means the sequence is Cauchy sequence. Why? Because we know that convergent sequence in R implies Cauchy sequence. So that means the sequence is Cauchy. It's a Cauchy, it's a Cauchy, is not a Cauchy, not a Cauchy. Fine. Now your target is to check whether the product is greater than 4 or less than 4. So how you can see, I can start from the left hand side, xn into xn plus 1. What is the value of the xn into xn plus 1? Xn into xn plus 1. That will be 2xn plus half. Fine. So let's assume that this will be greater than equal to 4. So that means 2xn is greater than equal to 8 minus 1, 7 over 2. Xn is greater than equal to 7 by 4. Fine. Now we can see what is the value of the x1. X1 is my 2. This is 7 by 4. Is it a greater than of the 7 by 4? Yes, satisfied. But if you look about the second case, that means this will be less than. अगर आप सेकंड केस लेस देन से सोचोगे तो क्या क्या डिफरेंस आएगा इसमें? सिर्फ ये साइन बदल जाएगा. दैट मीन्स 2 of xn is strictly less than 4. Fine. That means xn is strictly less than of the 2. But you can see x1, जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो यही इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाइड करी आपकी. इसका मतलब लेस देन वाला तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा. So that means this option A which is left behind is my correct answer of this problem. आप x2 भी देख सकते हो, बट जरूरत नहीं है. आप x2 निकालोगे, इसका कितना आएगा यहां से फिल करके 2 plus 1 over 4, that is 8 plus 1, 9 over 4. और x2 की वैल्यू देख लो, 9 over 4 is greater than equal to 7 by 4, satisfied. बट यहां से फिर नहीं सेटिस्फाइड हो रहा. x2 is less than, what is the value of the x2? 9 over 4, again which is not less than of the 2. So second option आपका कैंसिल.
आप अगर पहले इससे स्टार्ट करते तो इन दो रिजल्ट से आपके पास लेस देन वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता, और कॉची बिकॉज ये कन्वर्जेंट हो गई तो आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट। फाइन। अदरवाइज एक और शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस 1/a(xn) है, हमेशा याद रखो जब भी सीक्वेंस a और दिस है तो दैट मीन्स xn into xn plus 1 ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑफ द a स्क्वायर। फाइन। अगर आप इस शॉर्टकट ट्रिक से करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में, फाइन, तो कैसे करते हैं, इसको कंपेयर कर लो। a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जैसे ही A2 आया इसमें फिल कर दो तो आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनेगा, फिर डायरेक्टली आंसर आपका A हो जाएगा। और क्यों, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है आपके पास इन R में तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस आपकी कोची सीक्वेंस भी है, तो A सीक्वेंस आपका, A पार्ट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, इट्स ऑन योर चॉइस। सो अगेन मैं कह रहा हूं इस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, सभी क्वेश्चंस आपको इसमें इजीली मिलेंगे। एक बार सीक्वेंस के क्वेश्चंस भी आपके पास, आइगन वैल्यूज के भी हैं आपके पास, एवरीथिंग, डायरेक्शन, डेरिवेटिव, बायस्ड, अनबायस्ड, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑल आर अवेलेबल इन दिस playlist. You can follow my YouTube channel, Dr. Harish Garg. You can get a huge benefits from that videos. All these videos are free of cost. We will see the next lecture on the next 10 questions very soon. Till then, you can like, share, and comment on this video. And don't forget to comment on the videos. Happy learning always. Best of luck, students. Thanks for the watch.